This opening, अगर हम लोग costing की बात बता रहे हैं, because costing your goods and services. So before setting the price, we should be familiar with the cost of the product. Single unit की cost, we should be familiar with the single unit cost of the product which we are manufacturing, we are producing. So first of all, we need to understand what are the costs we have. Right now, we just explained that overheads, right? You just named few things. You talked about transportation, plastic, and then ink, right? And other few things we just mentioned. So we have fixed costs and then we have variable costs. The costs are defined as all the money your business spends to make and sell your goods or services. All the money, right? It is not specifically the material I need to produce this highlighter, right? So, in this regard, when we talk about all the costs, so we can divide the cost into two costs. So, the first one is the fixed cost and the second one is the variable cost. So, remains constant even when production volume changes, sales volume changes. If there is any change between the production or the sales, so this cost will remain same, just like rent. Right? I am paying 100,000 for this space. So by paying 100,000, it's totally up to me. I can produce 1,000 units within the same rent or 2,000 units, right? It will not affect the rent, right? So sales volume changes or the production volume changes or the amount of services being produced, provided. Okay. So now we have to complete this assignment number 9. Handout number 9. Okay. So you have to look over here that we first have to calculate the estimated variable cost per item, that is of super organic plus organic. Right? So we already have these figures given in the manual. So first of all, we have to check from where we get this value of 10. Do you know that, in the previous example that we have done, we got this 20 for 10 kg, right? So if 20 for 10 kg, so for 5 kg we can take for 5 kg we can take 10, right? Similarly, for the chicken manure, we had 3 for 10 kg. So for 5 kg, we'll have 1.5. So the second bag price will be remain same, right? 0.25 for in the case of super organic and 0.40 in the case of organic, 10 kg and 5 kg. So similarly, labor, as far as the labor is concerned, so $3 per hour. So we'll get 0.30 because in the previous example we had 0.60. For the super organic and for the organic, we have 10 kg, we have 0.60 per hour, right? So after doing all these calculations, we'll get this estimated variable cost, that is 3.15 in the case of super organic and $5.2 in the case of organic. Is it clear now? Okay? Okay. So now come to the fixed cost case. In this table, we already had all the previous figures. We just changed as per the scenario the 3 figures. So the assessment fees changed from to 80 from 50. As far as the labor is concerned, it is mentioned in the case that we have to minus the cost of the salary of the assistant. That was 495, including the insurance plus the pension plan. So we just minus this cost 495 from the total labor cost that was mentioned in the manual. That was 3850, and we got 3,355 the labor cost, right? And the third change was mentioned in the case which was depreciation, and we changed this depreciation over here. Here we go, because it's mentioned they purchased now the local machinery. The first one was 16,000 and the second was 7,000, 5 years the useful life, and we got this depreciation 4,600 divided by 12, we got 383. So after making all the changes, we got this 8382 total fixed cost. So what we have to do next is estimating the total variable cost of the business each month. So in this, as we know, we already have this quantity produced per month, 2,000 bags in the case of super organic and 2,400 bags in the case of organic.
we simply multiply by this variable cost. We already have 3.15 and 5.2 over here, and we got these figures. We just added to get this figure, which is 18,780 rupees. So now we have to calculate the estimated fixed cost per item, and we already know the formula. Estimated total cost per month, which was this, we already calculated. The second one was total variable cost of the business per month, total variable cost. We already calculated over here. And in the third step, we have to get the ratio between these two, which is 4.45. So in order to get the estimated fixed cost per item, what we'll do, we'll multiply this figure with this variable cost per item, and similarly 0.45 with this estimated variable cost for in the case of organic composite, which was 5.2. We'll get these two figures, right? So now we already got estimated variable cost per item and fixed cost per item in both the cases of super organic and organic. At the end, we already know this formula, which is variable cost plus fixed cost will multiply, will add in fact variable cost, this one, and fixed cost, this one. In the case of super organic and organic, we got this total cost 4.56, and in the case of organic, this one is estimated variable cost 5.2, and this one is 2.32 as the fixed cost. We'll add this, so we'll get this amount. Now the query is resolved or not? उसके पर्सपेक्टिव में भी आपने देखना है कि आप कॉस्ट एफिशिएंसी कहां पे लेके आ सकते हैं। होलसेल में हम देखिए, हो सकता है जैसे आप रिसेंटली देखिए, मैं एक एम्बेसी का नाम नहीं लूंगा, मैं उनसे फोन किया जी मुझे एम्बेसी, तो कहते हैं सर आप हमारे पास में, हमारा एक एजेंट है, आपने उसके पास जाना। ठीक है, तो मैंने कहा एम्बेसी आप हैं, आपने अपने, कहते हैं सर वो इतने सारे प्रोसीजर्स हमारे तमाम चीजों के हवाले से हमने उनको दिया, तो आप उनके पास वो ऑथोराइज हमारा है, और समटाइम वो आपको मना भी कर देती है कि आपने डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, आपने उसके थ्रू ही होकर आना। अब उसका कमीशन, उसका एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, अब मैं चाहूं भी तो मैं नहीं कर सकता ना, मुझे इस प्रोसेस से होकर आना है। इसी तरह कंपनीज भी कह सकती हैं भाई आपने हमसे डायरेक्ट रब्ता नहीं करना, हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये होलसेलर्स हैं, आपने इनसे रब्ता करना है एंड यू हैव टू परचेज। लेकिन इसमें एक एलिमेंट आता है, कॉस्ट का एक एलिमेंट ऊपर जाएगा, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो जाएगा जब जब दरमियान में पार्टीज आएंगी, द कॉस्ट विल इंक्रीज, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं हो सकता है, आपकी गुड जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए जो आपकी फैक्ट्री में नहीं है, वो सब के सब एनवायरनमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपके स्टॉकिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, स्टॉकिस्ट आपको वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं। अब दवाइयां तो बनती हैं, ठीक है, वो दवाइयां फैक्ट्री में बनती है ना, लेकिन स्टॉकिस्ट उनको स्टॉक करते हैं, क्योंकि और मामला वगैरह हो, तो उस पर्सपेक्टिव में चीजों को आप लोगों ने देख लेना है। Then what prices are your customers willing to pay? अब ये बात हम लोगों ने की थी फिनिश गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में भी, आपने ये चीज देखनी है कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्राइस दे वांट, ठीक है, वो पर्सपेक्टिव आप लोगों ने देखना है। और ये रिक्वायर्ड प्राइस अगर आप ऑफर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके स्टॉक के अंदर चीजें पड़ी हुई हैं, दे विल नॉट परचेज योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आपने भी देखना है, अगर आपके पास फ्रेम्स हैं तो उसकी वैरायटी क्या है, ठीक है, सस्ते वाले हैं, महंगे वाले हैं, मिड रेंज वाले, मुझे पता है कि मैं तो हर 2 महीने चेंज कर लेता हूँ, क्लासेस चेंज करता हूँ, लेट्स से, ठीक है, तो मैं मिड प्राइस के ऊपर जाऊंगा, आई विल नॉट गो फॉर हाई एंड प्राइस, ठीक है। इसी तरह आप देखें जो बच्चों के गारमेंट्स की कैटेगरी है, उसके अंदर ज्यादा महंगे कपड़े आपको कभी नजर नहीं आए। रीजन नहीं क्या है कि उनका साइज जो है हर साल जो है चेंज होते रहते हैं, महंगे कपड़े ले रहे जो साल बाद आपको कंफर्म पता है कि छोटे हो। और उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। एक मेरे पास वो भी है, एक्ट लाइक एन एंटरप्रेन्योर, वो हम लोग कल करते हैं, उसमें थोड़े से आपके जो है ना एक्टिंग स्किल्स देख लेंगे हम लोग, वो कल फाइनल डे भी रख लेते हैं। तो आज हम थोड़ा सा देखते हैं टाइम मैनेजमेंट की एक्सरसाइज है इसके हवाले से। इफ यू अगर आप थोड़ा सा ग्रुप्स में हो जाए, आप कितने लोग हैं, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, अगर आप ग्रुप्स बना रहे हो के वो बी फाइन। अभी थोड़ा सा उसको ग्रुप में देख रहे हैं एंड देन इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक एनेक्सचर दिखाऊंगा, ठीक है, एंड उस एनेक्सचर के अंदर आपके पास कुछ एक्सरसाइजेस होंगी।
टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, और उस हर एक्सरसाइज के आगे कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। सो आपने देखना है कि आपके पास जो गिवन टाइम है, उस गिवन टाइम के अंदर आप मैक्सिमम पॉइंट्स किस तरह इकट्ठे कर सकते हैं। एंड देयर कुड बी इंटरेस्टिंग टास्क, उसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वो काम आप लोगों ने करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको यहीं पे डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर आप लोग उसको कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप दिस, प्लान दिस एक्टिविटीज, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने देखना है कि कौन से काम आप कर सकते हैं एंड इन ऑर्डर टू गेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है जी। अपना कोई बिजनेस तो नहीं इसके अंदर डालना? नहीं, कुछ भी नहीं करना, इट इज अ गेम, एंटरप्रेन्योरियल गेम है ये, ठीक है। इसका भी उस टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो सिंपल मैंने आपको भी ये गेम आई गेस पढ़ा जा रहा है ना आप लोगों से, मैंने थोड़ा सा अंदाज भी कर लिया। अच्छा ये आई गेस विजिबल ना, लाइट ऑफ कर दूंगा फ्रंट वाला। एक मिनट ठीक है, हैं? ये दोनों भी कर दो, ये अब ठीक है। अब आप बैठ लें, पहले आप देख लें कि अब आपकी किस तरह प्लान है, मैं आपको कोई हिंट नहीं दे रहा। एट द एंड जो ग्रुप जो है, जो टीम जो है वो मैक्सिमम पॉइंट इकट्ठे कर लेगी, दैट टीम होती है विनर। सर एक बार बताएं कि इसका क्या मतलब है? लुक ये क्या है, एक्सरसाइजेस हैं 1 से लेके 12 तक एक्सरसाइजेस आपको आ रही है ना, 1 से लेके 12 तक, और ये सारी एक्टिविटीज हैं, कोई ना कोई एक्सरसाइज है। क्या नाम है? आपका क्या नाम है? 15 मिनट है आपके पास, बस देखते जाए सब लोग एक्टिविटी कर रहे हैं और फिर पॉइंट लाते हैं। फारूक, आपका क्या नाम है? इब्राहिम। जल्दी जल्दी, इब्राहिम नाम। जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसका नाम और उसके नंबर लिखते जाए साथ साथ। तो मोबाइल लाइव करते हो